मॉइस्चर। चिल्ड्रन, हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट में मिलता है। एंड द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे द इक्वेटोरियल रीजन पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड। सिमिलरली समर सीजन में मॉइस्चर ज़्यादा मिलेगा इन कंपैरिजन टू विंटर सीजन। एंड द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट अबव द मीन सी लेवल। जैसे हम ऊपर को जाते हैं हाइट पे तो मॉइस्चर का जो लेवल होता है वो डिक्रीज होता जाता है। चिल्ड्रन, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इज ऑलमोस्ट जीरो इन द कोल्ड एयर ऑफ द पोलर रीजन ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। चिल्ड्रन, एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर आता कहाँ से है? सो इट इज एडेड इन द एटमॉस्फेयर थ्रू evaporation of water, and it is also added from the moist ground and from the plant and animal through a process of transpiration. चिल्ड्रन, ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वाटर लूज करते हैं फ्रॉम देयर पार्ट्स। इवेपोरेशन का प्रोसेस सभी जगह पर देखा जाता है एट ऑल टाइम्स एंड एट ऑल द टेम्परेचर। इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है जब हमारे एटमॉस्फेयर में एयर हॉट, ड्राई और विंडी होती है, और जब एयर कोल्ड, मॉइस्ट एंड काम होती है देन द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेस। Humidity. Children, humidity can be of two types: relative humidity and absolute humidity. So the actual amount of water vapor present in the air is called humidity or absolute humidity, whereas relative humidity is defined as the ratio between the actual amount of water vapor present in the air at a given temperature and the maximum capacity of the air to hold the moisture at that temperature. Children, relative humidity is always expressed in percentage, while absolute humidity determines the amount of precipitation. It is relative humidity that tells us about the possibility of precipitation. Condensation. Children, condensation is the process by which water vapor changes into small drops of water, and the important forms of condensation are dew, fog, and clouds. When small drops of water condenses around the dust or smoke particles in the air, the mass is called the cloud. Clouds move from one place to another even by light air movement. So depending upon their shape and height at which they are formed, there are three types of clouds: cirrus, cumulus, and stratus. Precipitation. Children, when small water drops join together, they grow in size until they are unable to float in the air. Then they fall down as raindrop or flakes of snow. This process is called precipitation, and the main form of precipitation are rain, drizzle, snow, and hailstones. Children, depending upon how warm and moist current cools, rainfall can occur in the following ways. First is conventional rainfall, orographic rainfall, and cyclonic rainfall. So conventional rainfall. चिल्ड्रन, जब एयर अर्थ के हॉट सरफेस से कांटेक्ट में आती है तो एयर हॉट हो जाती है और हॉट एयर लाइट होती है एंड राइजेज इन द फॉर्म ऑफ करंट। जब ये वार्म एयर एटमॉस्फेयर की अपर लेयर से मिलती है जाके, देन इट एक्सपैंड्स एंड लूजेज इट्स हीट। देन क्यूमुलस क्लाउड्स बनते हैं और सडन रेनफॉल होती है विद थंडर एंड लाइटनिंग। और इस टाइप की रेनफॉल जो होती है वो चिल्ड्रन इक्वेटोरियल रीजन में ज़्यादा दिखती है। दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड कन्वेंशनल रेनफॉल। नेक्स्ट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। जब एयर के पाथ में कोई माउंटेन या हिल आ जाता है चिल्ड्रन, तो मॉइस्ट एयर जो होती है स्लोप से टकराकर ऊपर चढ़ जाती है, एंड एज द एयर मास राइजेज अप, cooling take place. Then through a process of condensation and precipitation, rainfall occur. This type of rainfall is called orographic rainfall. The windward side of the mountain gets rainfall, then the leeward side. Next type of rainfall is cyclonic rainfall. In a cyclone, when warm and cold air mass meet, the warm air जो चिल्ड्रन होती है वो लाइट होती है and it overrides the cold air, and this result in the condensation of the warm air mass and rainfall occur along the path of cyclone. Such rainfall is known as cyclonic or frontal rainfall, and it is common in the belt of westerlies, especially during the winter season. Children, we receive most of the fresh water from rain, and it is helpful for producing a variety of crops, but the amount of rainfall received varies greatly. It can cause floods and droughts at the same time in the different parts of the world.